So guys, आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2018 वेरिएंस 22. ठीक है, choose from the gases to answer the question. Which gas burns in the air to give only water? Hydrogen gas, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, तो वाटर बनता है. Is used to kill bacteria in the purification of water. Chlorine. Has a molecule containing only 11 atoms. 11 atoms. 11 atoms देखिए, यहाँ पर 4 atoms है total. यहाँ 3 atoms है total. यहाँ 2. यहाँ more than C4H10 होता है ना, more than यहाँ 14 है. ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, C3H8, यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे. तो प्रोपेन इज द राइट आंसर. उसके बाद ऑक्युपाइज 78% बाय वॉल्यूम. नाइट्रोजन. उसके बाद is released when calcium hydroxide is added to soil that contains the fertilizer ammonium nitrate. So when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given out. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास the transition elements occupy the central block of the periodic table. Iron and copper are typical transition elements. The compounds of transition elements are often colored. What is the color of iron 3 hydroxide? Red brown. ठीक है, a redox reaction happens when iron filings are added to aqueous copper 2 sulfate. Describe what is observed during this reaction. And obviously, pink brown solid of copper observe होगा, blue solution of copper fade होगा, green solution observe होगा. बहुत सारी इसमें 2 मार्क्स का है, तो 3 मैंने बताएंगे, 3 में से कोई 2 लिख दीजिए आप. ठीक है, तो 3 में से कोई 2 लिखनी है तो हम लिख देते हैं. Pale blue solution fades. Pink brown solid appear. Green solution form हो रहा है. Use the equation to explain the oxidation takes place in this reaction. अब देखें, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पर 0, और आयरन यहाँ पर क्या है आपके पास? 2+. इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट उसी वक्त होगा जब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो आप बताइए, आयरन loses electron during the reaction. ठीक है, use the equation to explain that reduction takes place in this reaction. आप देखिए, कॉपर आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, यहाँ पर कॉपर 0 हो गया. इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इसलिए क्योंकि कॉपर आयंस ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे. During the reaction,
copper two ions will gain electrons. Compounds containing ions of transition elements are often used as catalyst. Name a catalyst that is the compound of a transition element and state the reaction it catalyzes. Compound. Name a catalyst that the compound of the transition element. तो बेटा आप बताएंगे vanadium 5 oxide. Reaction है आपके पास 2SO2 gas plus O2 gas, 2SO3 gas. उसने रिएक्शन कहा है, नेम ऑफ रिएक्शन नहीं कहा, इसलिए मैंने रिएक्शन लिख दिया, लेकिन मैं सेफ साइड पे रहने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलूंगा. ठीक है. Catalyst increases the rate of reaction by providing an alternative reaction pathway with a lower activation energy. Explain why catalyst used in the industry. Because catalyst अगर activation energy को drop कर देता है तो temperature condition भी drop हो रही होती है, जो कि economical और productive होता है industrial point of view से. This makes the process economical because other temperature conditions do not meet temperature and pressure conditions during the reaction. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Silver chloride AgCl is insoluble in water and silver nitrate is a soluble salt. Silver chloride can be prepared by the reaction between aqueous silver nitrate and dilute hydrochloric acid. Describe the preparation of a pure dried sample of silver chloride from aqueous silver nitrate and dilute hydrochloric acid. आप जानते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिफाई होता है, और जब सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाएगा और मैं सिल्वर नाइट्रेट यूज कर चुका हूं HCl के साथ, तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड भी फॉर्म होगा. सही है. तो पहले सॉल्यूशन एसिडिफाई होगा फिर प्रेसिपिटेट होगा. तो हम क्या कहेंगे, हम किस तरह से बात करेंगे कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म एक्वस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आप बोलिए टेक सैंपल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and hydrochloric acid in a beaker. Mix both the solutions. Then precipitates are formed. Filter the mixture. ठीक है. Wash the precipitates. With distilled water. And dry them
through heat. Why heat? Because silver chloride decompose नहीं होते हैं under heat, stable to heat होते हैं. तो जब भी कोई salt stable to heat होगा, मैं heating to dryness परफॉर्म करूंगा प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करने के लिए. क्लियर होगी बात? आप चाहे तो फिल्टर पेपर भी रख के ड्राई कर सकते हैं, नो इशू एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी सही होगा. राइट द आयोनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन. तो सिल्वर आयंस हैं आपके पास, क्लोराइड आयंस हैं आपके पास, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सिल्वर क्लोराइड. इसके प्रेसिपिटेट हैं सॉलिड, ये दोनों आयन है तो एक्वस, ये भी आयन है तो एक्वस. Silver chloride decomposes in the presence of light to make silver and chlorine. What is the name of this type of reaction that requires light? Photochemical reaction, if you remember. Next, construct the equation for the decomposition of silver chloride. तो silver chloride आपके पास है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सिल्वर में और क्लोरीन में. क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगाइए, तो यहाँ पर भी 2 सिल्वर हो जाएंगे. ठीक है, कोई इशू तो नहीं है. Next question, next part, I mean, silver nitrate can be prepared by reacting silver oxide with dilute nitric acid. ये equation है आपके पास. Excess silver oxide is reacted with 30 cm cube of 0.15 mole per dm cube silver nitrate, 0.15 mole per dm cube nitric acid. After purification, the percentage yield of silver nitrate is 80%. Calculate the mass of silver nitrate prepared. Your answer. Give your answer to 3 significant figures. MR given है silver nitrate का. बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? Moles of silver nitrate डिटरमाइन करेंगे. 0.150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, डिवाइड करेंगे 100 से. बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? निकाले तो सही. (4.5 into 10 to the power minus 3 moles. ऐसे ही है ना? सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड दोनों के दरमियान रेशियो सेम है, isn't it? तो अगर आपने यहाँ पर 4.5 into 10 to the power minus 3 कैलकुलेट किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक मिनट बेटा, बस बस अभी इधर इधर बस बस. सही है. सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे. (4.5 into 10 to the power minus 3 moles. ओके, मोल्स आ गए आपके पास. अब क्या करेंगे? मास देख लीजिए. मास ऑफ AgNO3 तो 4.5 into 10 to the power minus 3 into 170. तो बताइए कितना आ रहा है मास?
0.76। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? आपको परसेंटेज यील्ड गिवन है 80%, राइट? और आपने प्रैक्टिकल यील्ड भी निकाल ली है 0.76 ग्राम, ठीक है। इसका 80% निकाली, इसका 80% निकाली। एक मिनट, 0.765 ग्राम is equal to what? 612। ये आपका बेटा आंसर आ गया, बता दें 0.612, ठीक है। ठीक है, now the next question is, लिख लें। Phosphorus is a non-metal in group 5 of the periodic table. Phosphorus can be manufactured from calcium phosphate. ये equation आ गई आपके पास। What is the maximum mass of phosphorus that can be made using 300 gram of silicon dioxide? Okay. तो सबसे पहले तो MR of silicon dioxide मालूम करना है हमने periodic table use करके। 32 plus 28, how much? 60? 60. Okay. मुझे अब मोल्स कैलकुलेट करने SiO2 के। ये हो जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 60, हाउ मच? कितना है बेटा? 5 मोल्स। आप जानते हैं SiO2 और फॉस्फोरस, इन दोनों में रेशियो कितना है? 6:1 का। अगर ये 5 मोल्स हैं तो बताइए मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे? सॉरी, 0.83 मोल्स। ओके, मुझे कह रहे हैं मैक्सिमम मास ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट करो, राइट? मैक्सिमम मास ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं MR ऑफ T4 से। तो 31 into 4 कितना होता है? 126 होता है, 124 होता है। 124 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, 103.3 grams, ठीक। P4 is a simple molecular structure. State 2 physical properties of phosphorus. बेटा आप बता सकते हैं low melting and boiling point। आप बता सकते हैं poor conductor of electricity या poor electrical conductor। सही है। वो भी ठीक था, ये भी ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट, using ideas about the structure and bonding suggest why calcium phosphate has a high melting point। तो आप बताएंगे calcium phosphate has a giant ionic lattice, exhibits a strong electrostatic attraction
So more energy is needed to overcome such forces. So more energy is needed to overcome such forces. So it has high melting. Complete the table about the number of electrons, neutrons, and protons in two particles. Okay. Phosphorus का atomic number 15 है, तो protons 15 है, electrons भी 15 होंगे और neutrons 15, right? अगर atomic number 15 है तो इसका मतलब symbol क्या होगा? Phosphorus. इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब चार्ज कितना होगा? 3 माइनस, और 18 एंड 15 मिलाकर कितना हो जाएगा न्यूक्लियन नंबर? सॉरी, इन दोनों को मिलाकर 31 हो जाएगा। न्यूक्लियन नंबर निकालने के लिए हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं ना, तो 16 प्लस 15 इज गोइंग टू बी 31। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, naphtha is a fraction obtained from petroleum crude oil. Explain how naphtha is obtained from petroleum or crude oil. तो बेटा आप सबसे पहले लिखेंगे कि क्रूड ऑयल को हम हीट करेंगे, तो क्रूड ऑयल इज हीटेड, then introduce in a fractionating column. ये जर्नल टर्म यूज कर लेते हैं, in a fractional distillation. Separation can be done on the basis of physical properties, like boiling point. सही है बेटे? Since naphtha has a specific boiling point, so it will collect it accordingly. Bulk compound in the naphtha fraction has a molecular formula C12H26. From this formula, how can we deduce that the compound is an alkane? तो आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, CnH2n plus 2, ये हो जाएगा C12H2 times 12 plus 2, ये हो जाएगा C12H26. सही, तो आप लिख दीजिए this compound follows general formula ठीक है बेटे, general formula of
alkane. उसके बाद the alkane C12H26 can be cracked to form an alkene and has a 6 carbon atom per molecule. Construct the equation for this reaction. Okay. तो ये हो जाएगा आपके पास C12, ऐसे नहीं होगा, C12 H26 gives you C6 H12. And then C6H. ठीक है, इसके बाद है आपके पास ethene can be made by reacting hydrocarbons. Draw a dot and cross diagram of ethene. You only need to show the outer electron shells. Okay. This is your first carbon, and this is your second carbon. ठीक है. Now this carbon has 2 hydrogen atoms. This carbon has 2 hydrogen atoms as well. Now we need to introduce the electrons. बहुत आसान है. इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 1, 2, 3, 4. ठीक है. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए. One, 2, 3, 4. तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में इनको बेटा डॉट से करना है. ठीक है. वो भी हो सकते हैं. मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना कार्बन से, इसलिए आप सिर्फ कार्बन को क्रॉस डॉट से कर लें, हाइड्रोजन को क्रॉस से कर लें, वो भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी आपके ऊपर है क्या करनी है. हम इसको इस तरह से बना सकते हैं. एक और तरीका बताओ बनाने का, तो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है, इससे ज्यादा मुझे ये आसान लगता है. कार्बन है, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. 1, 2, 3, 4. दूसरा कार्बन एटम है, उसकी भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे. 1, 2, 3, 4. इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है. ये भी डायग्राम एक्सेप्टेबल है. समझ आ रही है बात? गलत नहीं है वो, बट हम बनाकर इस तरह दे रहे हैं आपको. हमने नोट्स में इस तरह से करवाया आपको, इसलिए हमने इसको फॉर्मेट यूज किया. आप ये भी यूज कर सकते हैं. हायर लेवल के ऊपर ये यूज होगा. सही है. क्लोरीन reacts with both ethene and ethane. One molecule of ethene reacts with one molecule of chlorine. Draw the structure and the product of the reaction. Show all the atoms and all the bonds. Okay. See guys, this is CH2. This is CH2. If you remember, मैंने आपसे कहा था कि एक 5 बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्लोरीन ऐड हो जाती है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ. One molecule of ethene can react with 2 molecules of chlorine. What is the molecular formula of the organic product of this reaction? देखो ये है आपके पास C2H6 and 2 molecules of chlorine क्या है. तो इसमें से कितने हाइड्रोजन चले जाएंगे? 4 चले जाएंगे, 2 रह जाएंगे. कितने क्लोरीन आ जाएंगे? 4 प्लस व्हाट्स लेफ्ट? 2 HCl बनेगा. यहाँ 2 आएगा. ठीक है, बोलेंगे यस और नो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4Cl2. बात समझ में आ रही है?
जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से 2 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे. व्हाट्स लेफ्ट? C2H4Cl2. आप इस तरह से देखिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The diagram shows the partial structure of a polyester. Draw the partial structure of nylon. बना कर दिया था मैंने. NH box, NH CO box, CO NH box, NH CO. बोले yes or no? CO के बाद क्या आएगा? बॉक्स. और फिर क्या आएगा? CO. ठीक है. देखिए ये 1 2 3 रिपीटिंग यूनिट्स थे, तो हमने भी 1 2 3 रिपीटिंग यूनिट्स की. इन्होंने कंटिन्यूएशन यहाँ शो करी तो मैंने कंटिन्यूएशन CO से शो करी, इन्होंने यहाँ ऑक्सीजन से शो करी, मैंने यहाँ NH से शो करी. बिल्कुल टैली करके बनाया मैंने स्ट्रक्चर. समझ आ रही है बात? उससे कितने रिपीटिंग यूनिट्स शो किए? 3. तो मैंने भी 3 रिपीटिंग यूनिट्स शो किए हैं. उसने स्टार्ट O से किया, एंड CO पे किया. तो अमाइड में मैं स्टार्ट NH से करूंगा और एंड किस पे करूंगा? CO. The diagram shows the partial structure of an addition polymer. What is mean by the term addition polymer? When monomers react together to give polymer without loss of mass. Addition polymerization की beauty है, mass lose नहीं होता. Draw the structure of the alkene that can be used to make this addition polymer. आप नोट करें, ये आपका एक पूरा मोनोमर है, ये आपका दूसरा मोनोमर है, और ये आपका तीसरा मोनोमर है. सेम है, डिफरेंट है. तो मैं क्या करूंगा? मैं CH3 लिखूंगा, यानी वर्टिकली अरेंज करना है ग्रुप्स को. इसके साथ भी वर्टिकली अरेंज कर दूंगा CH3 ग्रुप्स को. और जाहिर सी बात है ये एडिशन पॉलीमर है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बिटवीन द कार्बन एटम क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड. Describe one pollution problem associated with the disposal of this addition polymer. तो आप बताइए नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं? Sulfurite is an O containing compound of zinc. One of the compound in the ore is ZnS. Calculate the mass of zinc in 30 tons of ZnS. सबसे पहले MR of ZnS 65 plus 32 कितना हो जाएगा बेटा?
30 टन्स को डिवाइड कर दो 97 से, कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट अच्छा, एक काम करें, 1 टन equals to 1000 kilogram and 1 kilogram equals to 1000 gram. तो 1 टन को जरा ग्राम में कन्वर्ट करें, कितना हो रहा है? हाँ, 100,000 ग्राम, यही। अच्छा, 100,000 ग्राम को डिवाइड करें 97 से, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? यस जुनेद, बोलो। Yeah, makes sense. So moles of zinc sulfide is 100,000 gram divided by 97. What is going to be the answer? चलिए, अब सही है, जल्दी करें जल्दी। 10309.27 नहीं है ये आंसर। पता नहीं, वो कह रहे हैं मुझे, कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास है ना? 1030.9 0.9 सिर्फ निकाले बच्चों। 1030.9 10 एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब तो कैलकुलेशन 1030.9। अच्छा, जो मोल जिंक सल्फाइड के वही मोल जिंक के हो जाएंगे। So mass of zinc 1030.9 into 65। जल्दी से निकालिए क्या आंसर आ रहा है। 65 over 97। अच्छा, अरे अब ये तो करके दो ना। 67.8.5 इसको टन्स में कन्वर्ट करो, टन्स में कन्वर्ट करो। ये ग्राम्स में, इसको टन्स में कन्वर्ट करना है। क्या बोला भाई? क्या हो गया भाई? ग्राम से टन्स में जा रहा हूं। डिवाइडेड बाय
करो 100,000 से। हाँ 6700 67008.5। मुझे ये क्वेश्चन 0.6 ZnS is heated in air, zinc oxide and sulfur dioxide are formed. Construct the equation for this reaction. So बेटा ZnS है, एयर से रिएक्शन कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा हमारे पास? 3। तो आप 1.5 कर दीजिए यहाँ पे। Suggest one environmental problem involved with heating. Sulfur dioxide is given off, which causes global warming and acid rain. Sulfur dioxide causes acid rain and global warming. Zinc oxide is reacted with dilute sulfuric acid to form aqueous zinc sulfate. Okay. ये जिंक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं, हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? जिंक सल्फेट प्लस वाटर में। Pure zinc is made by the electrolysis of aqueous zinc sulfate. Zinc formed at the negative electrode, hydroxide ions react at the positive electrode. Construct the equation for the reaction at both electrodes. Positive electrode is anode. Anode के ऊपर hydroxide ions हैं, ये discharge होंगे in the form of water, oxygen and 4 electrons, right? Or zinc forms at the negative electrode. इसका मतलब zinc ions electrons gain करेंगे और gain करके convert हो जाएंगे zinc। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? Zinc is used to galvanize iron to prevent the iron from rusting. Explain how galvanizing prevents iron from rusting. तो सबसे पहली बात, zinc is more reactive than iron. So it will oxidize into zinc ions and electrons. Oxygen and zinc react together to zinc oxide layer, which will protect iron. ठीक है जी, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है, तो जिंक प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड बनाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे, वो लेयर कोट हो जाएगी और उस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से वो प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन से। ठीक है, नेक्स्ट, a dynamic equilibrium mixture is established. What is mean by the term dynamic equilibrium? When rate of forward is equal to rate of backward
reaction. The pressure of the equilibrium mixture is decreased. The temperature of the closed system is kept constant. Predict and explain what will happen to the composition of the equilibrium mixture. The pressure of the equilibrium mixture decrease कर रहा हूँ. जरा देखिए. इन दोनों को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि दोनों सॉलिड्स हैं. तो जब मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. यहाँ चला जाएगा. सही है. मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग द प्रेशर causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side. जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है जहां ज्यादा होता है. ठीक है. Right hand side because of more number of moles. The temperature of the equilibrium mixture is increased. Okay, याद रखना टेम्परेचर को बेटा आपने इंक्रीज किया है. प्रेशर को आपने कांस्टेंट लिया हुआ है. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. What conclusions can be made about the enthalpy change of the reaction? If temperature is increased and the position of equilibrium favors towards right hand side, then it means forward reaction is endothermic. Forward reaction is endothermic. ठीक है. Next, calcium carbonate reacts with dilute nitric acid to form three compounds X, Y, and Z. Name Y and describe a test for this. Carbon dioxide test. Pass the gas through lime water. Observation: lime water turns milky. Name Z. Calcium nitrate. Chemical test. At anhydrous copper sulfate. At anhydrous copper sulfate, observation: solution becomes blue. Construct the equation for the reaction between calcium carbonate and nitric acid. ये बनेगा बेटा कैल्शियम नाइट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सही है. ओके.
Next, sulfonylic acid has a structure shown. Write the molecular formula of this. बेटा एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, ऐसा ही है. What is mean by the term acid? Substances which donate hydrogen ion in aqueous medium. Is called acid. What is the difference between weak and strong acid? The strong acid fully ionizes in aqueous medium. Weak acid partially ionizes in aqueous medium. What mass of sulfuric acid is required to this is this. Okay. आपको concentration of volume given है. इसके मोल्स आ जाएंगे. 1000 cm cube में 0.150 मोल्स हैं आपके पास. तो अगर आपके पास 250 cm cube है, बताइए मोल्स कितने होंगे? 0.03. ठीक है. MR निकालिए. MR of sulfonic acid. Sulfonic acid फॉर्मूला क्या था? SNO3H3, यही है ना? चलें, मास निकालिए. MR निकालिए. 32 plus 14 plus 16 times 3 plus 3 97. तो मास कैलकुलेट करने के लिए एक मिनट बेटा, मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके MR से, which is 97. 97. तो बताइए क्या होगा आपके पास? 3.6 grams. ठीक है. Part D. In the titration, 0.0025 moles of NaOH is exactly neutralized 0.15 moles per dm³ sulfuric acid. 1 mole of sodium hydroxide reacts with 1 mole of sulfuric acid. Calculate the volume in cm³ of sulfuric acid needed for this. देखिए 1000 cm³ of sulfuric acid contain 0.150 moles. क्योंकि उसने आपको कह दिया कि 1 mole of NaOH reacts with 1 mole of sulfuric acid और NaOH के मोल्स आपके पास 0.0025 है. इसका मतलब वही मोल्स एसिड के भी हो जाएंगे, राइट? तो अगर एसिड के 0.00250 मोल्स हैं तो बताओ वॉल्यूम कितना? चलो बताओ जल्दी से वॉल्यूम. 16.66 cm. उसके बाद वो कह रहे हैं 1 mole of aqueous sulfuric acid can produce 1 mole of hydrogen ions. Construct the equation to show the reaction between sulfuric acid and magnesium. Magnesium हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा क्या फॉर्मूला था बताइएगा? SNO3H. अच्छा ये लिखा हुआ है.
हुआ, बस ये लिखा हुआ, जिस तरह से ये लिखा हुआ है इसी तरह से देख लो, NH2SO3H लिखा हुआ है, ये बोलो यस और नो। तो बस इसी के रिस्पेक्ट से बात करनी है, देखो इसके रिस्पेक्ट से बात करनी है। ये लिखा हुआ है NH2SO3H और वो कह रहा है कि इससे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज हो रहा होगा, ये हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होंगे, जब भी तो वो कह रहा है कि 1:1 की रेशियो से रिएक्शन कर रहा होता है NH के साथ। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में बिठा लेते हैं NH2SO3H। ठीक है, ये हो जाएगा NH2SO3H, मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा NH2SO3 taken to Mg plus H2, यहाँ पर 2 मोल आएंगे। This is going to be extreme, इस पार्ट से एग्जामिनर जज कर लेगा बच्चों को केमिस्ट्री आती है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट लगवाया उसे ये कहा कि एस जो सल्फोनिक एसिड है वो एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, सही है, ये लिखा हुआ। और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है 2+, तो इसका मतलब यू नीड 2 मोल्स ऑफ दिस इन ऑर्डर टू मेक हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट ये बनेगा। जैसे मैग्नीशियम एथेनोएट बनाते थे ना हम, वैसे ही बनाया, समझ आ रही है बात, कॉन्सेप्ट लगवाया एग्जाम में, इसी से जज करेगा केमिस्ट्री आती नहीं आती। Ester A has the structure shown, ये बेटा ब्यूटाइल है और ये इथेनोइल। Ester A reacts with hot aqueous sodium hydroxide to give 2 compounds B and C। इसका मतलब ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हमने करवाई है आपको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड बी हैज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, कार्बन है 29.3, इसको डिवाइड कर दो 12 से, हाइड्रोजन है आपके पास 3.7, इसको डिवाइड कर दो 1 से, ऑक्सीजन है आपके पास 39, इसको डिवाइड कर दो 16 से, और सोडियम है आपके पास 28, इसको डिवाइड कर दो 23 से। बताओ क्या आ रहा है आंसर? कार्बन का कितना आ रहा है 2.44, ये हो जाएगा 3.7, ऑक्सीजन काउंट करो 2.44, सोडियम 1.22 से सबको डिवाइड कर दीजिए, वेट 2, 3.7 divided by 1.22 is 3.03, ये भी 2 सेम और ये 1, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H3O2Na। चल आगे चलें। Compound C has a relative molecular mass of 74 and it is oxidized by warm acidified potassium magnate 7 to give butanoic acid। इसका मतलब ये ब्यूटानॉल होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ब्यूटानोइक एसिड बना। Suggest structure for C, give your answer to, यार ये होगा ब्यूटानॉल, because on oxidation with KMnO4 in the presence of acidic medium, it will give ब्यूटानोइक एसिड। और अब मैं ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4 OH, सही है।
with oxidation with K1O4, it will give butanoic acid. Say next, what is mean by the term isomerism? Same molecular formula but different structural formula. Draw an isomer of ester A. Butyl ethanoic तो structure बना है ना. Isomer butanoic acid कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6. इसका एक चेन आइसोमर बना लीजिए, है ना. ब्रांच एक अटैच हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3 COOC. यहां पर एक हमने ब्रांच अटैच कर दी मिथाइल की. And this one is 4. Agreed? ये सबसे आसान है. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है बट ये सबसे आसान है. कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इस CH3 को इस कार्बन एटम पे बनाया होगा, वो भी करेक्ट कंसीडर कर लेगा एग्जाम. ठीक है. Explain why ester A is a saturated hydrocarbon, because single bond exists between carbon atom. Because single bond exists between carbon atoms. Ester can be used as a fragrance or perfume because it diffuses easily. Explain why the rate of diffusion of this ester decreases as the temperature decreases. बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएगा. जब मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल स्लो डाउन होगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगी. सही. So just one other use of ester A, food flavoring. Finally, सबसे पहले आप MR ऑफ जिंक सल्फाइड निकालेंगे which is 97. क्योंकि ये एक ओर है जिंक सल्फाइड, तो इस ओर के अंदर जिंक की परसेंटेज डिफरेंट होगी, सल्फर की परसेंटेज डिफरेंट होगी. तो हमने क्या किया, हमने जिंक की परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट करी, वो हमारे पास आ गई 67%. हमने क्या किया, इस 30 टन का 67% कैलकुलेट कर दिया गया. बस ये ठीक है. बेटा इस पार्ट को दोबारा से देखिए. तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक इन 30 टन्स ऑफ जिंक सल्फाइड. आप जानते हैं कि जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फर दोनों अवेलेबल हैं. हम सबसे पहले MR ऑफ जिंक सल्फाइड कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास कितना आ रहा है भाई, 97. आप जानते हैं कि ये 97 है और आप जानते हैं ये 65 है. अगर आपने 30 टन लिया है तो बताइए ये कितना होगा. तो 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 से, डिवाइड कर दीजिए 97 से, बताइए कितना आंसर आ रहा है, 20.1. दिस मेक्स सेंस.